my lord. The present case is lodged under section 498A along with 307, 377, 506, 504, 380 and other section of the IPC as well as 3-4 of the DPI. As per prosecution case, my lord, informant alleged that she got solemnized marriage with the petitioner on 17/5/2019 and after that there was demand of dowry in respect of gold chain, my lord, and due to non-fulfillment she was subject to cruelty, my lord. And it is further alleged that while he was in drunken condition, the petitioner done unnatural offence with her, my lord. And on this basis, the present case has been lodged, my lord, annexed to a petition filed by the petitioner for restitution of conjugal life, my lord. That was filed on 19/3/2020. And after getting knowledge, the present case has lodged on 15/9/2021, my lord. You are study since 6/7/2022. My lord. I am appearing on behalf of his forward lordship. Yes, बोलिए. इसमें लॉर्डशिप हम रहने तैयार हैं और ये रखने भी तैयार हैं. इसको वही मीडिएशन में सिविल कोर्ट में भेज दिया जाता. पहले तो जेल से निकालिएगा इनको तब ना. जी जी, वही मीडिएशन तो यही दे दिया जाए हजूर. डायरेक्शन एक डेट फिक्स कर दिया जाए कि वहां जा करके हमको ले लें. ठीक, लिखिए. Having regard to the submissions made on behalf of the petitioner and the informant that both of them are ready to live together, and for this purpose the petitioner for this purpose both the parties are looking for sending the records as the looking for initiation of a mediation proceeding in the learned court below, comma this instead of. आप कब जाइएगा इनको लाने बोलिए तो पिटिशनर? हजूर अभी तो हम जेल में, हजूर जेल से निकलेंगे उसके बाद ही ना हजूर. अभी तो कुछ तो बताइएगा ना. बड़ा कैजुअल आप बोल रहे हैं. कुछ जेल से निकलेंगे उसके बाद ही जाना है. उसमें कहाँ दो जो हजूर डेट फिक्स कर देंगे हजूर उसके अनुसार अकॉर्डिंगली हम जाएंगे हजूर. कोर्ट में ही बुला लिया जाएगा हजूर तो ज्यादा बेहतर होता कि आप जानते हैं ये पति पत्नी में हम ये तरह का चीज पसंद नहीं करते हैं कि आप क्योंकि हजूर हम रेस्टिट्यूशन किए थे केस. अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो क्लियर नहीं रखने को हम तैयार हैं हजूर. इसीलिए रेस्टिट्यूशन भी किया था. रखना वर्ड ही पहले तो आप गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं. रखने के लिए तैयार है. कोई आप लग रहा है कि सामान को रखना है उठा करके वो नहीं. अरे आप उनके साथ एज ए वाइफ हस्बैंड आप लोग वही कह रहे हैं हजूर. हाँ तो उसकी बात कीजिए ना. ये बड़ा ही डेनिग्रेटिंग वर्ड है. रखने के लिए तैयार है. नहीं जो रखने में एज ए हस्बैंड वाइफ जैसे जनरल लोग रहता है तो आप रहने के लिए तैयार. अगर वाइफ हस्बैंड के रूप में जीना चाहते हैं तो जाइए इनको लेकर के आइए. जो हुआ नहीं रहना चाहते हैं तो आप बताइए कि हाँ हम नहीं रहना चाहते हैं. जो होगा हम तो जो रहने के लिए रेस्टिट्यूशन भी फाइल किए थे. ठीक है तो आपको हम 1 महीना का समय देंगे. रिलीज के बाद आप जाके लेके आइएगा इनको. जी जी. क्या लिखा है? As with regard to the submissions made on behalf of the petitioner and the informant that both of them are ready to live together, and for this purpose both the parties are looking for initiation of a mediation proceeding in the learned court below, and at this stage learned counsel for the petitioner undertakes on instruction that after his release from jail, the petitioner shall go to the place of the informant and shall bring back his wife to his matrimonial home with full dignity and care within a period of 1 month from the date of his release, this court directs release of the petitioner on bail on furnishing bail bond 25,000 2 securities. या ऐसे कर दिए. This court directs release of the petitioner on provisional bail for a period of 2 months from the date of his release on furnishing bail bond 25,000 2 securities
subject to the conditions and further condition that as per his undertaking within 1 month after his release he will bring back his wife to his matrimonial home and both the parties shall live with and the petitioner shall keep his wife with full dignity and care. Full stop. After 2 months, both the parties shall appear in the learned court below, and upon satisfying with the conduct of the petitioner, the learned court below shall confirm the bail bond of the petitioner. इसमें एक चीज है जो क्लियर था कि उन्होंने भी डायरेक्ट दिया कि वो कोऑपरेट करेंगे साथ आ जाने के लिए, जो कि यहाँ तो जो हो जाता है हम तो पहले भी अगर कोई डिफिकल्टी होगी आपको तो आप फाइल कीजिएगा पिटीशन यहाँ मॉडिफिकेशन लिखिए that counsel for the informant dash wife has undertaken that she will definitely accompany her husband. Full stop. This court expects that she will cooperate with her husband in living together. Full stop. This application stands disposed of accordingly.